फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक जरूर देखिएगा, और देखने के बाद अगर ये आपको लगता है कि हाँ ये समझ में आ रहा है आप लोगों के और कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी हम वीडियो जो है अपलोड करते हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट, फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन 18 डिग्री अपान कास 72 डिग्री, ठीक है। और सेकेंड पार्ट है tan 26 डिग्री एंड अपान cot 64 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट साइन 18 डिग्री इंटू कास और कास 72 डिग्री इंटू साइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we can write sin 18 degree is equal to cos 90 degree sin 90 degree or minus 72 degree. This value is 18. 90 minus 72 degree means 18. So sin 18 clear upon cos 72 degree. Here we apply the complementary angle ratio. So sin 90 minus theta is equal to cos theta, or therefore sin 90 minus 72 degree is equal to cos 72 degree upon cos 72 degree is equal to 1. ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट tan 26 degree upon cot 64 degree, we can convert tan into cot or we can convert cot into tan. So here we convert cot into tan. First time we convert numerator sin into cos, but in second time we convert denominator. Here tan 26 degree upon cot 90 degree or minus 26 degree is equal to tan 26 degree upon cot tan 26 degree, because we apply the complementary angle formula. Cot 90 minus theta is equal to tan theta, therefore cot 90 minus 26 degree is equal to tan 26 degree, cancel, is equal to 1. So answer of first is equal to 1 and answer of second also is equal to 1. Third part, question number 1, third part है cot 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, एंड फोर्थ पार्ट cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, फोर्थ पार्ट cosec 31 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री, here we convert cos into sin or sin into cos. Here third part cos 48 degree means cos 90 degree
माइनस 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 90 cos 90 minus 42 degree means cos 48 degree. Therefore, cos 90 minus theta is equal to sin theta. Here we can write sin 42 degree or minus sin 42 degree is equal to 0. Fourth part, cosec 31 degree, cosec 31 degree or minus sec 59 degree, we convert sec into cosec or cosec into sec. Here we convert sec into cosec. Cosec 31 degree minus sec 90 minus 31 degree. ठीक है, 90 minus 31 degree is equal to sec 90 minus 31 means sec 59 degree. So here cosec 31 degree or minus sec 90 minus theta is equal to cosec theta. Cosec 31 degree, cosec 31 degree minus cosec 31 degree is equal to 0. Here the answer of third part is equal to 0 and the answer of fourth part also is equal to 0. And we try to solve question number 2. Question number 2. Here question number 2, show that tan 48 degree, first part, tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree into tan 67 degree is equal to 1. First part, here we can convert tan 48 degree here into tan 23 degree, tan 48 degree and tan 42 degree into tan 42 degree into tan 23 degree into tan 67 degree. LHS. Tan 48 degree and we can convert tan 42 degree into cot. So here tan 90 or minus 48, tan 90 minus 48 means tan 42 degree into, we can convert tan 23 into cot or tan 67 into cot. So we can convert tan 67 into cot, tan 23 degree into tan 90 minus 67 degree. 90 minus 67 means, 90 minus 23. 90 minus 23 degree means 67 degree. Here tan 48 degree, tan 90 minus theta is equal to cot theta. Therefore, into cot 48 degree into tan 23 degree into tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 23 degree. Here tan 48 degree
into cot 48 degree means 1 upon tan 48 degree into tan 23 degree into cot 23 degree means 1 upon tan 23 degree. Tan 23 degree cancel, tan 23 degree, tan 48 degree cancel, tan 48 degree, 1 into 1 is equal to 1 is equal to RHS. Clear? So first of all we convert any in paired and tan 48 degree, tan 42 degree and tan 23 degree and tan 67 degree, ताकि कॉम्बिनेशन जो है 90 डिग्री का बन जाए। इनका कॉम्बिनेशन 90 डिग्री बन रहा है, देखिए 67 प्लस 23 90, इसका कॉम्बिनेशन 42 डिग्री प्लस 48 90 बन रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में लेकर के इसे हम कन्वर्ट करते हैं। पहुंचते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है इसका। सेकेंड पार्ट cos 38 डिग्री into cos 52 डिग्री into cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री into sin 52 डिग्री into sin 52 डिग्री is equal to 1, sorry, is equal to 0, is equal to 0. Here we can also convert cos 52 into sin and cos 38 into sin, or sin 38 into cos or sin 52 into cos. Here we convert cos 38 degree and cos 52 degree into sin. Here cos 90 minus 52 degree means cos 38 degree into cos 52 degree into cos 90 minus 52 डिग्री 90 माइनस 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। cos 90 माइनस 52 मीन्स साइन थीटा, हियर साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री, तो इंटू हो गया साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। टू वैल्यूज आर सेम, देयरफॉर इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 0। इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 here if tan 2a is equal to, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, find the value of a.
find the value of A. Here 2A is an acute angle. We know that trigonometric ratio is also of an acute angle. Trigonometric ratio हमेशा acute angle का ही होता है. Therefore, it is written here 2A is an acute angle. Tan 2A is equal to cot A minus 18, cot A minus 18 degree. Here we can convert cot into tan or tan into cot. So here we convert tan 2A into cot. Here tan cot 90 degree minus 2A, cot 90 minus theta is equal to tan theta, यानी tan 2A. So we can write cot 90 minus 2A in place of tan 2A, क्योंकि this value is tan 2A. Cot 90 minus theta means tan theta, cos 90 minus 2A means tan 2A. तो tan 2A के प्लेस पर cot 90 minus 2A is equal to cot A minus 18. We eliminating the cot on both sides. So 90 minus 2A is equal to A minus 18. A is transposed from right to left. So minus 2A plus A minus A is equal to minus 18 or minus 90. Minus 3A is equal to minus 108. Minus minus cancel to each other. A is equal to 108 by 3 is equal to 36 degree. The value of A, find the value of A. The value of A is 36 degree. Question number, next question, question number 4. Question number 4. Question number 4, if tan A, question number 4, if tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 degree. Prove that A plus B is equal to 90 degree. So tan is equal to cot B. Prove that A plus B is equal to 90 degree. Here tan A is equal to cot B. We can convert tan A into cot A or cot B into tan. So we convert tan into cot. So here cot 90 minus A, 90 minus A in place of tan A, because the value of cot 90 minus A is equal to tan A is equal to cot B, eliminating cot on both sides. 90 minus A is equal to B, minus A transpose left to right. So 90 is equal to A plus B. Therefore, A plus B is equal to 90 degree. It is proved. Question number 5. Question number 5. Question number 5. If sec 4A is equal to, if sec 4A is equal to
cosec a minus 20, cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, where 4a is an acute angle, find the value of a. Find the value of a. Here we convert sec into cosec or cosec into sec. So we convert sec into cosec. Therefore, sec 4a is equal to cosec a minus 20. We can write sec in place of sec 4a, cosec 90 minus 4a is equal to cosec a minus 20. We eliminating both side cosec. So here 90 minus 4a is equal to a minus 20. A transposing to right to left. So minus 4a minus a is equal to minus 20 minus 90 minus 5a is equal to minus 110. Minus minus cancel. A is equal to 110 by 5, 22 degree. To find the value of a, here the value of a is 22 degree. Next question, next and last question, question number 6. Question number 6. If A, B and C are interior angle of a triangle ABC, if A, B and C are interior angles of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2, sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2. In this question, we know that in any triangle, angle A plus angle B plus angle C is equal to 90 degree. Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. Therefore, angle B plus C, angle B plus angle C is equal to 90 degree minus angle A, and dividing by 2 on both sides, so angle B or plus angle C by 2 is equal to 180 degree. यहाँ पर होगा सारी, तो 180 डिग्री और माइनस एंगल ए, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री और माइनस एंगल ए बाई 2. टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो हियर साइन एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ यू कैन राइट टेकिंग sign on both sides, so we can write sin angle B plus angle C by 2 is equal to sin
90 माइनस एंगल ए बाई 2, तो हियर साइन एंगल बी और प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। Therefore, in place of sin 90 minus angle a by 2, we can write cos a by 2, angle a by 2. It is proved. So here the ends of exercise 8.3. अब हमें दीजिए इजाजत और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुभ दिन।